गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करेंगे आज। एक्सीडेंट्स एंड हाइपोग्लाइसेमिया। So empty stomach cardio or just coffee and cardio are especially lethal for people who run. खाली पेट में कॉफी पी के, खाली पेट में हो या कॉफी पी के हो, अगर हम लोग रन करने जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। साइकिल on roads or drive to gyms. So after overnight fasting, your body has lost almost 80% of its glycogen stores. पूरा रात भर जब हम फास्टिंग करते हैं, सोने को जा रहे हैं, फास्ट हो रहा है, तो हमारा बॉडी में 80% ऑफ जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है वो खत्म हो जाता है। सो व्हेन यू वेक अप एंड ईट नथिंग or just marrow a coffee, your body doesn't magically burn fat, but burns whatever carbs are left and then turns to the precious muscle tissue instead. खाली पेट में कार्डियो करने से वो आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन उसको खत्म करने के बाद इमीडिएटली वो आपको आपका जो मसल है उसको मसल टिश्यू को क्षति पहुंचाएगा। एंड यू स्टे फैट, आप तब भी मोटा रहेंगे। So well, there is something worse than that, and that is going out in low carb and therefore low blood sugar rate. कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाने से ब्लड शुगर कम हो जाता है, which reduces glucose availability to your ग्लूकोज। जो ब्रेन को हमारा ग्लूकोज की जरूरत है वो कम हो जाएगा। So now you must remember that living in India means that pedestrians, runners, cyclists are second class citizens. So expect cars to not slow down for you, and if you look sexy enough, then for cars to slow down and come dangerously close to you simply to check you out. Or if you live in Mumbai, then the rickshaw driver to slow down close to you and say something very flattering like cash sacks and the likes. Now, if the brain is feeling low, then your reflexes will be slow. So your ability to save yourself from a car zooming at high speed or to hit the driver who slows down to check you out is well dangerously slow. एक बहुत ही अच्छा हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लो हो जाता है तो ब्रेन के लिए क्या होता है, आपका ब्रेन के लिए टाइमिंग होता है, सोचने का क्षमता होता है, स्लो हो जाता है। कोई कार ड्राइवर आपके पास आके कुछ बोल रहा है, कोई ऑटो ड्राइवर कुछ बोल रहा है, लेकिन आप उससे स्लो, आप रेस्पॉन्स आपका स्लो हो जाता है। सो यू कुड लैंड अप हर्टिंग योरसेल्फ, एंड इफ यू आर ड्राइविंग ए कार then hurting others because of this slow brain to voluntary muscles. So number one thing, जिंदा रहेगा तो पतला होएगा. Get it? So let us summarize what we have learned till now. Number one is having essential fats as part of our regular diet is crucial for cardio to be an effective fat burner. हमें अगर कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं तो रात जो शाम का जो डिनर हम लेते हैं उसमें जरूर एसेंशियल फैट्स की जरूरत है।
तो हमारा फैट लेना जरूरी है, जैसे कि कल बता रहे थे। Second is carbs are the primary fuel source for cardio activity, and inadequate carbs in your muscle reduces the body's fat burning abilities. मसल में अगर आपका जब कार्डियो जब खत्म हो जाता है, carbs are the primary fuel source of cardio activity. कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्डियो एक्टिविटी का प्राइमरी सोर्स है, लेकिन अगर हम इनएडिक्वेट कार्ब्स लेते हैं, बहुत लो कार्ब डाइट में रहते हैं, तो मसल क्या करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस इज द बॉडीज फैट बर्निंग, बॉडी फैट का जो बर्निंग एबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स हैव ए डिटेल लुक टू हाउ टू प्लान योर मील्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कार्डियो। सो चलिए टेक्निकल नोट है, थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे बता रहे हैं। कार्डियो एंड डिहाइड्रेशन। वेट, even before we get into meal planning, drink water and loads of it, because cardio is among the most dehydrating activity. जब हम कार्डियो एक्टिविटी करते हैं हमारा शरीर से बहुत सारे पसीना निकलता है। सो इसीलिए स्पेशली इफ यू ट्रेन आउटडोर्स, अगर बाहर होते तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा वोंट लीव यू हाफ आज डिहाइड्रेटेड आज कार्डियो विल। अगर हम कोई बाहर जाके कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो पसीना हमारा उतना निकलता नहीं है, लेकिन एंड सैडली ओनली ड्रिंकिंग वाटर डजंट हेल्प। द मोर रेगुलर यू गेट with your cardio, the more actively you have to do preventive maintenance of your hydration status. So to put it simply, you have to watch out for dehydrating conditions in your life. Stress, एयर कंडीशन ऑफिसेस, अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, उससे भी हमारा डिहाइड्रेशन होता है। सो स्ट्रेस एंड ओवर एक्सपोजर टू एयर कंडीशनरिंग, you understand, or at least I am going to pretend you do. So we'll quickly list out some of the processed foods that dehydrate. कौन सा खाना हमें डिहाइड्रेट करता है? बिस्किट्स, even the ragi and multigranules and other packed foods, ये भी हमें डिहाइड्रेट करता है। अल्कोहल, पैकेज सीरियल्स, कोला, एनर्जी ड्रिंक, buffets and late night meals. These foods and food situations is essentially cost your body a lot of water, the cellular level. So now, once you start doing preventing maintenance, you will have to avoid these foods for food situations at least 48 hours before and after exercise. 48 घंटा पहले, क्योंकि बहुत जब हमारा शरीर जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो इससे पहले हमारे जो डिहाइड्रेटेड करने वाला जो फूड है, फूड से उसको नहीं लेना चाहिए हमें। इफेक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा? लॉस ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम मसल्स, आपका मसल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। साइंस ऑफ हीट इंजुरी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होने से इंजरी क्या क्या हो सकता है? फीलिंग ए चिल एंड स्टैंडिंग ऑन हेयर ऑन एंड्स, डिक्रीज्ड वर्कआउट परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। नॉसिया एंड वोमिटिंग, आप वोमिट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, थ्रोबिंग हेडेक, उससे आपका सर भी दुख सकता है। इफेक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, उससे क्या हो सकता है? इंजरी, ड्राई स्किन हो सकता है, पुअर थर्मोरेगुलेशन हो सकता है, आप अनस्टेडीनेस एंड कंफ्यूजन रह सकते हैं, आप एंगर हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका शरीर से इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो सकता है। फास्ट डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन। सो ये सब
हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, आई एम ए डॉक्टर एंड आई वुड लाइक टू, quite often when I'm speaking to an at an event or a conference, and I make sweeping statement like you can never get enough water, so keep sipping water to the day. Invariably, there will be some doctor in the crowd who stand up to correct me. वो बोलते हैं, जब मैं कोई सेमिनार लेता हूँ वहां पे बताता हूँ कि भाई देखिए आप दिन भर में ऐसा सिप सिप करके पानी दिन भर में लीजिए, वहां पे कोई डॉक्टर जरूर होगा वो खड़ा होकर मुझे करेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाए. All fitness professionals have faced there in their life the intimidation by doctors. When fear wins over facts, we would be starting out or the best professional in our field or whatever. But doctors get intimidated not by us, but I guess by the idea that crowds will listen to something that is not based on fear or staying. कभी कभी डॉक्टर लोग को घबरा जाते हैं कि इतना ये सब बोल रहे हैं हमारे सामने, तो वो आपसे वहीं पे उनको नसीहत देने के लिए खड़े हो जाते हैं. So the British Medical Association recommends 8 glasses and anything more than that is harmful to kidneys. Or some such statement will follow. Now, number one thing that we should all know is that 8 glasses, whether the British Medical Association said it or anyone else, is at best a generalized statement. Also, to give these associations due credit, they inform people who go by the book that hydration requirements changes over period of time and may vary among various people. Hydration अलग अलग हो सकता है. So changing environment से आपका हाइड्रेशन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है. अभी हमें आज तो नया पता चला कि आप एसी में रूम में रहते हैं तभी आपका डिहाइड्रेट होते हैं. मेडिकल स्टेटस को पानी ज्यादा जरूरत है, किसी को कम जरूरत है, और हिस्ट्री. सो really if you must go by these recommendations, then know that what they are telling you is the lowest requirement, not the optimum. वो आपको बता रहे कि मेडिकल एसोसिएशन आपको लो पानी लेना चाहिए. So they admit to not knowing your life fully and are relying on you to use common sense and drink water accordingly. Before exercise, 4 hours or more prior, 4 घंटा पहले, the night before, or for launch in case of evening cardio session. अगर इवनिंग कार्डियो सेशन करते हैं तो लॉन्च बिफोर आपको क्या करना है, राइस दाल सब्जी और सांबर राइस सब्जी और रोटी सब्जी दाल और पुलाव रायता और your own local version of cereal, oils and essential fat like coconut, ghee, filtered groundnut, mustard, sesame oil that is used for seasoning. A wholesome meal the night before your training, especially when you train for high endurance activities like long distance running, cycling, or are a beginner to exercise. Or if your prime motivation for cardio lies in fat burning, is crucial. A meal that represents local grains, dals, pulses, and vegetables, along with traditionally used fats, such as ghee hai, coconut hai, increase your chances of using fat as a fuel during exercise. अगर हम ऐसा रात को जो डिनर लेते हैं, अगर ऐसे जो दिन हम कार्डियो करते हैं, जिस दिन रनिंग करते हैं, जिस दिन आपको पता है उस दिन एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा पसीना होगा, तो आपका खाना ऐसा होना चाहिए. So this happens because
of increased free fatty acids in the bloodstream and serves two main purposes. It leads to slow, steady rising blood sugar. अगर आप वैसे खाना लेते हैं आपका स्लो स्टेडी ब्लड शुगर होगा, आप नींद भी अच्छा होगा, और it allows you to top up liver and glycogen stores. प्री वर्कआउट क्या करना चाहिए? प्री वर्कआउट मीन्स सप्लाई स्टेडी ब्लड शुगर एंड डिले फैटिग. हमें वर्कआउट पहले हमें क्या करना है? ऐसा हमें खाना लेना चाहिए जो हमें ब्लड शुगर स्टेडी होना चाहिए और हमारा फैटिग नहीं होना चाहिए. इसीलिए प्री वर्कआउट में क्या करना चाहिए? ये प्री वर्कआउट मील मस्ट हैव व्हाट यू हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज एज कार्ब्स. फ्रूट. प्री वर्कआउट पहले आपको फल लेना चाहिए. इफ एक्सरसाइजिंग इन लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें फ्रूट्स लेना चाहिए. एंड आइदर पोहा, उपमा, इडली और पराठा. इफ स्टार्टिंग इन मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटा लगेगा अगर आपको एक्सरसाइज पहले, आप ये लेना चाहिए. ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या लेना चाहिए? एंड व्हाट डू यू ईट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? नथिंग माय डियर. Even if the cells of your gym are packed with cardioblast or some such product with a mixture of caffeine, vitamin B and carb, so just plain and simple water does the trick of increasing performance and hence calorie burning too. कार्डियो के समय आप किस चीज में पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा दूसरा कुछ कार्ब लेना कोई जरूरी नहीं है. So make sure that you sip and not gulp. Sip करना है. So if you are on a treadmill, walking at 6 or running at 8, then slow down to 4 or 6 respectively to sip some water. जब हम पानी लेते हैं थोड़ा slow down हो जाएंगे. The reason is that when you are breathing and heart rate is higher, it can get tougher for water to make its way to stomach. And then there is always the danger of water entering the windpipe accidentally. Even a momentary slowdown make it easier for the water to make its passage to the stomach. So it is exactly this physiological reason why most elderly people will ask you to sit and drink water. ये जो बुजुर्ग लोग हैं हमें बोलते हैं कि आप बैठ के पानी पीना है rather than stand. So slow down. थोड़ा स्लो हो जाएंगे, आप पानी पिएंगे. सॉरी, सिप एंड डोंट कॉल. सिप करके पानी पिएंगे. एंड इफ यू रन और साइकिल आउटडोर्स, अगर आप भाग रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, देन नो दैट मोर वाटर एंड मोर कार्ब जेल्स और एनर्जी ड्रिंक्स इज नॉट मैजिकली गोइंग टू मेक यू फास्टर. अगर हम ऐसा पानी ज्यादा पी लेंगे कि कोई कार्बोहाइड्रेट जेल ले लेंगे या कोई एनर्जी ड्रिंक लेंगे, ये आपको भागने में बहुत फास्टर नहीं करेगा. एनर्जी ड्रिंक्स कैन गेट वेरी डेंस इन ग्लूकोज, एंड सिंस लिमिटेड ग्लूकोज इज एम्प्टीड फ्रॉम योर स्टोमक इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल retard gastric emptying, leading to less absorption of glucose in the blood and therefore quicker fatigue. So go slow on energy drinks and stay well hydrated, but practice drinking water at every training session, not just on the long runs or rest day. Long run rest day में कोई ज्यादा पानी पीना सही नहीं है. ट्रेनिंग सेशन में हम ले सकते हैं. So plain simple glucose or even sugar is enough to give you the energy. So is good old nimbu pani with sugar and kalakand, a kala namak. So remember how you keep talking about running being accessible. Cheap sport while wearing shoes that you bought on a 40% discount and cost only 15,000. The deal is to dilute the drink. Technically, it is called a
hypotonic solution where you can barely taste the flavor. About 2 gram or less of glucose per 100 ml is a good place to start. Or make nimbu pani and dilute it to 3 times. Get it? Now only if Dadima sold nimbu pani as a carb ringer, that is something that minerals that maintains a balance between gastric emptying and glucose utilization by the working muscle tissue. So we should have treated or differently ना. चलिए कल अगर पढ़ेंगे हाइपोनाट्रीमिया. आशा करता हूँ आज के सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. सुने होंगे बहुत अच्छे, क्योंकि कभी कभी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, हमें कुछ पता नहीं है. सो दादाजी को थैंक्स देंगे. सो नेक्स्ट सेशन चलेंगे 5 मिनट. आप आज लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे, तो इसलिए 5 मिनट आपको